Hello everyone, welcome back to our channel, K Family. Hi everyone, welcome back to our channel. So finally, जैसे आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि हम फाइनली इंडिया आ गए हैं और हमारी कायरो भी इंडिया आ गई एंड शी इज बैक इन हर समर क्लोथ्स. मैं आज एक वीडियो बनाना चाहती थी जिसमें आई वांटेड टू शेयर द ट्रैवल टिप्स that I experienced and our experience traveling with this is one. As everyone knows, Kaira was 5 months old when we traveled, and there are a lot of small things that I wish I knew, that I feel like I should share with everyone. So I'm going to cover a lot of points, right from what to pack and how was the flight journey, what was the experience and everything. So I have everything written down so that I don't miss any point. Let's get started. Let's get started. Let's get started. So first thing that I'm going to cover is what to pack and what a baby bag should have while traveling, like the carry-on bag. So we traveled by Emirates flight, and it was Toronto, Dubai, Mumbai. Basically Toronto, Dubai, Mumbai. 10 kg की बैग हमें अलाउड थी and for her, and उसमें so usually we are not allowed to carry liquids in our carry-on bags, but because I was traveling with a baby, I was allowed to carry liquid, that is water. I also carried her ready-to-feed infant formula. I was allowed to carry a milk powder, her medicines, everything that's not usually allowed on a flight. We were allowed because I was traveling with a baby. What I did was while packing, मैंने पैक किया था अपने साथ baby powder, milk powder. Also Kaira was on ready to feed, वो ready to feed लेती थी milk, तो मैंने वो ready to feed के bottles carry किए थे अपने साथ. मैंने बहुत सारे डायपर सेट्स कैरी किए थे बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, ऑलमोस्ट डोर टू डोर 24 आवर्स की जर्नी थी, तो मैंने बहुत सारे डायपर्स कैरी किए थे अपने साथ. Wet wipes, obviously. I also carried a changing cloth. You can carry a use and throw changing cloth जिसपे आप उसको रख के डायपर चेंज कर सकते हो. मैंने अपने घर में जो यूजुअली मैं यूज करती हूँ वही कैरी किया था. रैश क्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत से मेरे फ्रेंड्स के बेबीज को ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग रैशेज हुए थे. कायरा को ऐसे कुछ नहीं हुआ, बट रैश क्रीम इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कैरी. तो बेबी के मेडिसिन लिए थे मैंने उस बैग में. देयर वाज टाइलेनॉल, जैसे बेसिक मेडिसिन, फीवर के लिए टाइलेनॉल या क्रोसिन ड्रॉप्स अगर आप यूज करते हो, विक्स वेपर अप, नोज ड्रॉप्स. I also carried a thermometer. So majority आपकी बेबी के लिए आपको जो भी needs है medicines, you can carry that. I also carried pacifiers. I carried 2 pacifiers. Kaira uses pacifiers, and she in that phase used to use pacifiers. She doesn't use it anymore. But I carried 2 pacifiers. I also carried pacifier clips. जो उसके ड्रेस को मैंने क्लिप किया था, एंड देन उसके अदर एंड को pacifier होता है, so that वो फेके ना एंड she doesn't drop them. So I carried that. मैंने उसके बहुत सारे napkins, bibs और pajamas कैरी किए थे. उसको मैंने कंफर्टेबल पजामा में ड्रेसअप किया था, so that a full onesie so that she can sleep comfortably. And I also carried one blanket, caps, socks and mittens. I did not use the socks and mittens because she was in a complete onesie, but I still did carry them. But cap was very important because in between flight में काफी ठंडा हो जाता है, and blanket and cap is a must for a baby. And I also carried few of her toys. So this is all I carried in the carry-on bag, and I feel all these things are a must. So हमने Emirates का टिकट बुक किया था, which was Toronto, Dubai, Mumbai. Toronto, the overall journey costed me, for an adult, it costed us $2,500 Canadian dollars, which is approximately 1.4 lakh INR. और बेबी का टिकट जब हमने बुक किया था, हमें कहीं पता नहीं था कि क्या करना है, तो हमने ऑन लैप टिकट हमने रिसर्च किया, एंड वी फाउंड आउट दैट वी हैव टू बुक एन ऑन लैप टिकट. So basically, because she is a small baby, she does not occupy a whole seat. She gets a bassinet. So what हमें bassinet seat book करनी थी.
But वहाँ पे on the Emirates website there is nothing called as bassinet seat like booking. What you have to do is you have to book an on-lap ticket for a baby. So that's what we did, which costed us $200 Canadian dollars. It comes with a 10 kgs 10 kgs bag which a baby can carry. So Kaira के लिए हमें 10 kgs bag allowed थी. And during takeoff or landing हमें ऑन लैप टिकट का मतलब होता है ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग बेबी आपके लैप पे होता है एंड वंस द प्लेन इज अप इन द एयर एंड इट्स स्टेबल एंड सीट बेल्ट साइन ऑफ हो जाती है you have to ask the air hostess for the bassinet. So basically bassinet seat is where जो front seats होते हैं जहाँ पे आगे कोई सीट नहीं होती है, there's a wall, तो वहां पे वो लोग bassinet अटैच करते हैं, बट यू हैव टू आस्क देम फॉर इट. सो जैसे ही हमने वी सैट ड्यूरिंग बोर्डिंग, मैंने उस एयर होस्टेस को बोल दिया था दैट आई विल नीड अ bassinet once we take off, and she said yes, once we take off we will give you the bassinet. So जैसे ही हमने take off किया उसने हमें bassinet ला कर दिया and it was like a normal bassinet जो अपने घर पे हम लोग यूज करते हैं, but it is a little smaller in size. But because Kaira was just 5 months old then, it was okay for her. She was completely comfortable. मैंने उसके नीचे, वो लोग ब्लैंकेट वगैरह भी देते हैं पर मैंने अपना भी कैरी किया था तो मैंने वो नीचे बिछाया एंड शी स्लेप्ट ऑन दैट एंड शी स्लेप्ट थ्रू द फ्लाइट. We had a very smooth flight, so she mostly slept throughout the flight in that bassinet. But if your baby is a little bigger, then the bassinet could be a little smaller in size, but that's what it is. हमारी फ्लाइट जर्नी काफी स्मूथ थी. मैं बिफोर ट्रैवलिंग विद कायरा आई वाज सुपर एंग्शियस बिकॉज अमोल वाज नॉट ट्रैवलिंग विद अस. इट वाज जस्ट माय डैड, मी एंड कायरा. आई थॉट कि वो रोएगी या फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा इतना देर ट्रैवल करना. But our journey was totally opposite of that. She was completely chilling. She was comfortable. She was, smiling at everybody. She did not cry even once. So काफी अच्छी रही हमारी journey, and there are a few things that I did. I researched about it and I did, and I would like to share that with you as well. So first things first, जब हम airport पहुंचे, टोरंटो एयरपोर्ट, मैंने उसे घर से निकलने से पहले फीड किया था, राइट बिफोर वी लेफ्ट द हाउस. एंड हमारी जो एयरपोर्ट तक की जर्नी एंड बिफोर अंटिल वी बॉर्डेड, शी वॉज लाइक फुल अंटिल दैट टाइम. सो आई मेड श्योर दैट वो इतना फीड कर ले कि वो उतना टाइम तक शील बी फुल. But by the time we boarded and we were about to take off, she was like super hungry, but I kept her a little engaged and I did not give her milk as soon as she started becoming cranky. मैंने उसको थोड़ा सा wait करवाया. It was not like she was completely hungry, but I could understand that अभी उसकी भूख का टाइम हो गया है. So what I did was I kept the milk bottle ready as soon as हमने जैसे board किया टोरंटो में flight. मैंने मेरे साथ एक mug carry किया था. So I would suggest carry a small mug if you're using a ready to feed bottle, because Kaira wasn't ready to feed. I need to heat up the milk by keeping the bottle in the hot water mug. So I carried a mug from the house and I asked for hot water, boiling water, to the air hostess, and the air hostess were kind enough to provide the hot water for me every time I asked them. So I heated up the water and I kept the bottle ready, and as soon as जैसे हमारा take off start हुआ, I fed her and she drank up the milk like that. Like वो इतनी भूखी थी, I mean she was hungry, so she immediately took the bottle, and then by the time we were up in the air, she dozed off to sleep. So that worked out really well. तो उसे जो ear pressure है उसका कोई issue नहीं हुआ because she had a bottle in her mouth. If your baby is not hungry, maybe you can try pacifiers if they take pacifiers. But feeding during takeoff and landing is something that I did, and it worked out wonders for me. She did not cry during takeoff or landing. So this is something that I kept in mind. I kept the time in mind जब मैंने इसे कब feed किया है, और even during the flight, मैं every 4 hours उसे, even if she's even before she asks for it, मैं milk ready रख देती थी, क्योंकि if she wakes up, I'll feed her. तो वैसे मैंने टाइमली उसे फीड करती रही, तो she was not hungry at all. टाइमली उसका डायपर चेंज करती रही. So she did not have wet diapers issue as well. So whatever her issues of could have been of जिससे वो रो सकती थी, वो सब मैंने पहले ही eliminate कर दिए. So this is something that you guys can remember. Keep a track of time, कितने बजे बेबी ने फीड लिया है, and accordingly you can feed them on the frequent intervals, and also keep changing them.
And if you plan to carry a stroller with you, then stroller भी carry करना allowed है and it's free of cost. You can either check in your stroller and car seat at the luggage जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे हम हमारा luggage check in करते हैं. Either you can check in at the Toronto airport वहीं पे, या फिर if you want to carry the stroller up until the flight, जहाँ पे आप flight board करते हो, before that you have to check in the stroller and the car seat. So we had not carried a stroller, but I know that हमें बोला गया था that it is allowed and it's free of cost. So if you are giving up, if you have taken a baby ticket or an infant ticket, stroller and a car seat is allowed for an Emirates flight. So I would suggest if you guys need a stroller, please do carry. हमारे पास इंडिया में ऑलरेडी एक स्ट्रोलर था हमारे फैमिली में, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया, वहां से नहीं लाया. But there are two options. You can either check in the stroller at the luggage check-in जहाँ पे हम हमारा luggage check-in करते हैं, or else you can carry the stroller with you and then check in right before you board the flight. So there are two things, and then आपको आपका जो stroller और car seat है directly at your destination मिलेगा. You will not get the stroller in between in Dubai or wherever your halt is. So we decided that we don't want to carry that. इंस्टेड हमने एक बेबी कैरियर कैरी किया था, जो मैंने उसको अपने आप को स्ट्रैप करके मैंने कायरा को अपने पास रखा था. सो थ्रू आउट वो मेरे बेबी कैरियर में थी. एंड आई थिंक दैट वाज इजियर बिकॉज बेबी कैरियर में शी वाज क्लोज टू मी एंड शी वाज स्लीपिंग. सो उसके लिए काफी कंफर्टेबल था वो सब. So I carried a baby carrier, but before we just bought this baby carrier for the travel purpose. She was not used to the baby carrier before. So I would suggest अगर आपके बेबी को भी बेबी कैरियर की आदत नहीं है, तो I would say that 10-15 days before you travel, start getting the baby used to the carrier. हमने वही किया, हम उसे घर में लेके घूमते थे, मॉल में उसमें लेके घूमते थे, हर जगह कहीं भी जाते थे. We used to take her in that carrier. So eventually she got used to it. Initially वो बहुत रोती थी, but then eventually she got used to that carrier, and then the whole journey she was in that carrier with me, wherever we were walking and not in flight. So वो काफी comfortable थी, उसमें सो रही थी, उसी में she was like chilling out. So she was completely fine. So I would suggest if your baby is also not used to like Kaira in a baby carrier, 10-15 days before, start getting them used to it and start taking them out in that carrier. For changing as well, I have as everyone knows, जो flight में तो washrooms होते हैं, they are pretty small, they're pretty compact. But Emirates की flight में I was pretty okay. I mean जितने मैंने videos देखे थे या फिर मैंने पढ़ा था, I mean obviously we've traveled as well, तो वो काफी कॉम्पैक्ट लगता है. मुझे लगा था कि विद बेबी कैसे होगा, बट इट वाज नॉट दैट बैड. मैंने जैसे ही वो चेंजिंग टेबल को नीचे किया, इट वाज अ बिग टेबल फॉर बिग इनफ फॉर अ 5 month old, एंड मैंने अपनी वहां पे चेंजिंग शीट बिछा के आई चेंज हर डायपर्स एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज pretty smooth for me. So changing was not a big issue. So to summarize, the 3 things that I did was feeding during takeoff and landing, changing the diapers at frequent intervals, and feeding the baby every frequent interval, whatever the baby usually has at home. Those are the 3 things that I tried. Also, one more thing that I tried which helped me was when Kaira was awake, जब वो खेलने के मूड में होती थी, I kept one new toy with me, because वो हर चीज chew करने के स्टेज में है अभी. So I carried a new chewing toy for her, which was also a rattle toy. तो एक छोटा सा compact toy मैंने रखा था, which was new to her, and I introduced that new toy to her, which kept her busy during her waking hours of time. जब भी वो playful mode में होती थी, I used to give her that toy, and वो उसी में busy रहती थी. So I did not give her a chance to get bored, if that makes sense. I mean that's what I feel, at least that's what I did. But it's a good idea कि आप एक नया toy आपके पास रखे and let the baby explore the new toy, और उसी में थोड़ा time जाएगा, फिर वो थक के वापस दूध पी के सो जाएंगे. So that's something that I did, which you guys can also remember on every flight or every trip that you take with a baby. One thing that helped us in Dubai is that जैसे ही हम लोग फ्लाइट से बाहर आए, वहाँ पे उनका जो एयरपोर्ट स्टाफ था, they were really helpful, और वहाँ पे
उन्होंने हमें immediately they just offered us a golf cart to travel from one end to the other, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट फ्लाइट का गेट था. बिकॉज हमारा ड्यूरेशन काफी छोटा था, 1.5 घंटे का ही हॉल्ट था. तो इट वॉज प्रिटी, हमें बहुत फटाफट सब चीजें करनी पड़ती थी. एंड अलॉन्ग विद द बेबी इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट अगर वो कार्ट हमें नहीं ले जाती तो, क्योंकि फिगरिंग आउट वेयर टू गो, एंड इट वॉज रियली फार फ्रॉम वेयर आवर फ्लाइट हैड लैंडेड टू द नेक्स्ट गेट. जो डिस्टेंस था काफी दूर था, बट वहाँ के एयरपोर्ट स्टाफ दे वर रियली हेल्पफुल, और उन्होंने हमें उस कार्ट में से लेकर गए एंड दे ड्रॉप्ड अस राइट नेक्स्ट टू आवर गेट, विच वॉज रियली गुड बिकॉज कैरिंग अ बेबी एंड एवरीथिंग एंड वॉकिंग इज रियली डिफिकल्ट. तो वो था जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल था. सेम चीज हमारे साथ मुंबई में भी हुई. जैसे ही हमने लैंड किया, वहां पे लोगों ने हमें वो कार्ट अरेंज हुई थी एयरपोर्ट स्टाफ की, और उस कार्ट में बैठकर हम लोग लगेज तक, आई मीन इमिग्रेशन और लगेज और वो सब एरिया तक उन्होंने हमें उसके पहले तक छोड़ा. एंड वहां पे इट वॉज ईजियर बिकॉज देन वी डिड नॉट हैव टू वॉक सो मच. And जैसे ही we landed at Mumbai, because Kaira had a Canadian passport, we had to fill up a form for foreign travelers. So उसके लिए हम एक छोटा immigration form जैसे होता है वो fill करना था, and then we had to go to immigration. So something which Indian parents with kids who have foreign passport need to remember, that they need to fill out that small form and provide that at the immigration counter along with the baby's passport and visa and everything. And if you are someone like me who is traveling from a very cold country like Canada to a very warm country like India, especially in Mumbai, one thing that I remembered was during the flight she was wearing full pajamas. Kaira was wearing full set of pajama. But जैसे ही हम लोग मुंबई में लैंड किया, first thing that I did was मैं उसे वॉशरूम लेकर गई. मैंने अपने साथ एक समर क्लोथ्स कैरी किया था, एंड आई मेड श्योर दैट शी चेंज्ड इनटू दोस समर क्लोथ्स बिफोर वी इवन वेंट आउट ऑफ द एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट पे इतना रियलाइज नहीं होता है, यू स्टिल हैव एसी एंड एवरीथिंग, बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द एयरपोर्ट, एंड बिकॉज इट वॉज अप्रैल समर सीजन, काफी गर्मी थी, तो आई मेड श्योर दैट शी वॉज इन हर समर क्लोथ्स. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम a cold country to a hot country, hot weather country like India, remember कि आपको summer clothes carry करने हैं, so that the baby is not, the baby doesn't feel too hot or temperature का ज़्यादा issue ना हो. So all in all, it was a wonderful journey for us. Emirates was super comfortable for us to travel. Baby के साथ मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, वो भी इतने दूर, एंड दे मेड श्योर दैट इट वाज सुपर कंफर्टेबल. कायरा बिल्कुल भी नहीं रोई, तो दैट वाज लाइक अ प्लस पॉइंट फॉर अस, लाइक अ बोनस फॉर अस. वहाँ का स्टाफ एमिरेट्स का काफी हेल्पफुल था, जिन्होंने हमें एवरी टाइम आज देम फॉर बॉइल्ड वाटर उन्होंने मुझे दिया. अगर मैं देख रही थी कि बाकी के थोड़े बेबीज जो थे, थोड़े बहुत जो क्रैंकी होते थे इन बिटवीन, वो लोगों के साथ जाके खेल रहे थे. दे वर टेकिंग सम load off the parents and they were trying to help the kids. So it was really nice. It was a wonderful experience for us. और उनका staff काफी helpful है. Even the ground staff at Dubai and Mumbai and in Toronto, everyone was super helpful because you are carrying a baby. And there is a one thing that I've never experienced, is because you travel with a baby, you always get first preference everywhere, even while boarding and everything. So all in all, our journey काफी smooth थी. हमें कहीं भी हर्डल नहीं हुआ. जितनी एंक्शियस और नर्वस में थी, उसका like 10% भी कुछ नहीं हुआ. So I was pretty happy with it. And also Emirates की दोनों flights में they have come up with a small thing, which is if you're traveling with a baby, they will click photographs for you, so as a memory of an Emirates flight with the baby. So it was a very cute gesture which they gave. I have this photo with me. They provided us with this photo जहाँ पे मेरे डैड और कायरा है. So they clicked this photo and they gave it to us, and it is a cute memory that I will preserve as Kaira's first flight. So I'm super happy that I traveled with Emirates, and it was
Kaira's first time experience in any flight was Emirates, so I'm super happy. And I hope मेरे travel tips आपको अच्छे लगे होंगे, थोड़े बहुत helpful होंगे. And if I've missed on to anything, please let me know in the comments that I can remember for the next travel as well. But if you like this video and if you found it helpful, please don't forget to like, share and subscribe, and also comment and let me know if you are liking the content that I'm making. And please keep supporting us. Bye bye.